Yes, ma'am. I'm saying, Yes, ma'am. guys, you need to keep your cameras on, no? So we'll start the marking from next class. And I hope to cover 50% BCA batch 1 first and then BCA batch 2. Please, those who are in batch 1, get the word around because students in your class are not attending the classes. For some reason, best known to them. So they need to attend their classes, and if they are absent, they will be getting 0. So mark you is something which is serious. Okay, let us continue. Proposals. We're talking about technical proposal, research proposal. All the proposals have one thing in common. The definition remains to be the same, except that the technical proposals, things should be technically included, and it is shorter than, because it is not descriptive. It just describes any process of a thing, how you will be doing it, and the technical aspects involved. Well, let us continue with that. अभी तक लोग अपना कैमरा ऑन नहीं किए, they remain to be hidden, then your attendance will also be hidden. If you don't come to me, ma'am, I attended all the classes, how come, ma'am, I got 0? So this is the reason why you get 0. If you continue to be hidden, your attendance will be also hidden, right? Okay. कर दीजिए ना थोड़ा सा. Yeah, we already did the basic definition. It always talks about steps. So the question was, what are the 4 parts of a technical proposal? Step 1, the overview of process approach. It means how are you going to execute your plan? तुम किस तरह से अपने proposal पर काम करना शुरू करोगे? अगर तुम्हारा accept हो गया तो तुम कैसे start करोगे और तुम्हारा process क्या रहेगा? Implementation of plan, किस तरह से तुम implement करोगे? Whatever you have written, जो भी तुमने लिखा proposal में, तो will you follow word to word, step by step? किस तरह से implement करोगे? How will you deliver? So all these things are following one after the other. Process remains to be the same. Overview, कैसे implement करोगे? कैसे deliver करोगे? Description of what's in scope, out of scope, what is in the scope, what is out of scope. It means what is not required and what will be required. किस चीज का scope है और किसी चीज का scope नहीं है, उसको भी define करोगे, right? पता नहीं अंकुर राज, दोनों लोग वहीं आए, माइक्रोफोन मेरे पास भी नहीं आया, कहाँ है? Good morning, ma'am. अभी नहीं है रजिस्टर, आज चले जाएंगे. वो सुन ही नहीं रहा है ना, इज नॉट इन द क्लास. लॉग इन करके कहीं और बात कर रहा है. All right. Overview, implement, किस तरह से carry out करोगे अपना plan, किस तरह से deliver करोगे, and description of what is in scope, what is out of scope. In scope, it means what is required, why is it beneficial, क्यों ये आपको accept करना चाहिए, उसको define करना है, and what does it include that will be helpful or beneficial.
and how unnecessary things you are omitting, आप छोड़ रहे हैं, unnecessary things के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, what is out of scope. Description of what the client will need to provide. It means यहाँ budget के बारे में बात आती है. Client आपको क्या, what are you expecting from the client? Time, space allocation, monetary gains, budget, सब include हो जाता है. What are your descriptions of what you need from the client? उसको आप डिस्क्राइब करेंगे. बिल्कुल प्लेन वर्ड में डिस्क्राइब करना होता है, कंसाइज एंड प्रिसाइज वे में, सो दैट द रीडर, द क्लाइंट शुड नो कि हमको क्या देना है. नथिंग शुड बी वेग. एंड एवरी 3 नंबर पॉइंट बता दीजिए तो थोड़ा सा. हाँ, क्या बता रहे हो? 3 नंबर पॉइंट डिलीवरेबल. डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज इन स्कोप, मतलब आप जो प्रपोजल दे रहे हैं उसका स्कोप आगे क्या है. जैसे मैंने 3 नंबर बोला है, 3 नंबर डिलीवरेबल्स, तुम किस तरह से डिलीवर करोगे. जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डिलीवरिंग, जो हमने प्लान आउट किया उसको हम डिलीवर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ फैकल्टी एंड आई हैव गिवन अ प्रपोजल टू टीच बिजनेस कम्युनिकेशन. तो किस तरह से हमको डिलीवर करना है, किस तरह से मुझे क्लास लेना है, मेरा क्या मेथोडोलॉजी होगा. विल इट बी थ्रू पीपीटी, विल इट बी थ्रू लेक्चर, विल इट बी थ्रू नोट्स. ठीक है, तो किस तरह से मुझे इसको डिलीवर करना है, डिलीवरेबल्स. ठीक है. And the last is communication process. Can anybody tell me what is communication process and how does it start? Hello? लिखे नहीं है आप लोग? मैम, कम्युनिकेशन प्रोसेस ग्रीटिंग से स्टार्ट होता है. नहीं. मतलब किसी ने लिखा नहीं. Please write down. Communication starts with ideation. It means we have an idea. लिखा था ना, encoding, channel, decoding and feedback. याद है? यस मैम. Yes, ma'am. Message. यस मैम. वही तो पूछ रहे हैं. What does the process, communication process start with? तुमको हमसे कुछ बात करनी है, तो सबसे पहले क्या होगा? There has to be an idea. Ideation कहते हैं इसको. It starts with an ideation. There has got to be an idea. किसी से कुछ बात करने के पहले you think of an idea. Proposal लिखने के पहले you have to have that proposal in your mind. Any kind of communication, whether it is written or oral or proposal, it needs to have the process. It should follow the communication. You will write something. It means you are encoding in a way that the person, your client, will be able to understand. Communication should always be, number one, should always be simple. And if you're talking about a technical proposal, it should be concise and compact. Concise का मतलब नहीं है कि बहुत कुछ छोड़ के आप लिखेंगे. Concise means you have to include everything in a short paragraph. So the communication process starts with an ideation. For example, let us start with encoding. You will encode, you will write in such a way, you will speak in such a way so that the client understands. Encoding, then you will seek, how will you send? Will you send a hard copy? Will you send a soft copy? Will you start with a telephone call? Will it be personal, one-to-one? ये किसकी हरकत है? ये एकदम से जाहिलपना दिखा देते हो ना. कुछ लोग हैं जान के जो क्लास डिस्टर्ब करते हैं, ना पढ़ेंगे ना किसी को पढ़ने देंगे. हाउ डेयर यू. रिमूव कर दीजिए ना मैम, रिमूव कर दीजिए. इस तरह से अगर बात होगी ना, एक वजह से पूरी क्लास बंद हो जाएगी.
लेट दैट पर्सन सफर। उसको भी एक पिंच होना चाहिए कि तुम्हारे वजह से क्लास सस्पेंड अगर हो रहा है तो। ब्रिज क्लास से तुम लोग का ये शुरू हो रहा है, ये खत्म ही नहीं होता है। एक की वजह से पूरी BCA 1 एंड BCA बैच 2 यहाँ पर बदनाम हो रहा है। Nobody is behaving in such a way. इतनी क्लासेस चल रही है ना सिवेज में, किसी भी क्लास में ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा एक्सेप्ट इन योर क्लास। तो ठीक है, I will give a report on this and action will be taken. वैसे भी we are giving a report here about each class. Academic progress and everything is included. Hello. Voice is not coming, ma'am. एक तो दिस इज रूड कि आप कैमरा ऑफ करके हमसे बात कर रहे हैं। Why should I speak to you? ठीक है, तो हमारा अटेंडेंस ले ही लेते हैं अभी। मैम सॉरी मैम, फोन किया तो नहीं पता, हम लोग को क्लास फिर से खराब हो जाएगा मैम। क्लास आगे बढ़ेगा नहीं, जिसको निकलना निकल सकते हैं। मैम उसको रिमूव कर दीजिए ना। I want that person to own up. Who is this person? Please raise your hands. ये तो आपकी वजह से ये पूरी क्लास सस्पेंड हो गई आज। मैम जो जरूरत का नहीं है उस चीज को लॉक करके रखिए ना, नहीं तो ये बैच 2 बहुत परेशान करता है। इनका बहुत सारा कंप्लेन आया, BSc-IT वाले इसका कंप्लेन कर रहा था। बैच 2 का नाम पर्टिकुलरली का है आप ले भाई, ऐसे आप नहीं ना बोल बैच 2 इसी के लिए फेमस ही है। ऐसा कोई बात नहीं। आप बोलिए B1 किसके लिए फेमस है? सर लोग बैच 2 के आड़ में कुछ बैच 1 के बच्चे भी है। हम तो देख रहे हैं कि बैच 2 के बच्चे में तो हमको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं है। I have never had any problem in batch 2. There were some problems when they were in offline classes, wherein I had there were some students who were absconding, class नहीं कर रहे थे, जिनका ऑलरेडी क्लास लिया जा चुका था। फिर भी बैच 2 के या बैच 1 का I don't care कि बैच 1 का बच्चा है या बैच 2 का बच्चा है। One person is enough. One rotten apple is enough to spoil the whole class. ठीक है, जहाँ बहुत सारे बच्चे अच्छे भी पढ़ रहे हैं, वहाँ एक बच्चे की वजह से इतना जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसका वो भरपाई कर पाएगा? Every minute is important. Now I have thought I will never mute you because this has to be interactive because you all keep asking questions. लेकिन मुझे आज म्यूट करना पड़ गया ना तुम लोगों को, तो आप है मुझे मार, तो चलो ठीक है, बदनामी तो सिर पे ले ही रहो, मेरी भी रिपोर्टिंग चली जाएगी। थोड़ा सा सिक्योरिटी छूट जाता है, अपना तुम लोग कमाल दिखाना शुरू करते हो। नहीं समझ में आ रहा है, चुपचाप बैठो, हाथ पे चलाने की जरूरत नहीं है। So the communication starts with, अभी हम पूछेंगे आपसे, in 10 minutes I will be asking you questions. और जवाब कोई नहीं दे पाया I will remove and suspend। अब आगे का भी अपना बिगाड़ ही कर रहा है।
So communications process starts with encoding. You encode a message, encoding, message, channel, decoding and feedback. सबसे पहले आता है encoding. It means encoding means a person who gives the message, sender. The person who sends the message, the person who transmits the message, the person who delivers the message, whether in writing or speaking. It can be both ways. Person who delivers, person who starts persons who start the conversation, initiates the conversation, a person who has an idea who would like to deliver it to somebody else. Communication process starts with encoder. It means the person who transmits the message. Please write it down, otherwise you will not be able to make a presentation. Then the moment you start to encode, you will think of a channel. कैसे बात करना है, लिख के बात करना है. Will it be through mail? Will it be through WhatsApp? Will it be through Messenger? Will it be face to face? Will it be on the telephone? So it is up to the end person who transmits the message to decide कि वो message कौन सा channel choose करना है उसको. You can choose the channel as per your needs and situation. Face to face, on the phone, mail, soft copy, hard copy, what? It is for you to decide. The person who encodes decides. What deciding? Decide the channel. So encoding, message, choosing a channel. Third में आता है channel. Fourth में आता है decoding. The decoder is the person who listens. So decoder कौन होते हैं? वही जो मैसेज को सुन रहा है. The listener is the decoder. The receiver, encoder होता है वो जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है. एंड डिकोडर होता है जो सुन करके समझता है और फिर फीडबैक देता है. The person who listens is the person who is decoding the message, and then he gives the feedback. उसके बाद क्या करता है? वो फीडबैक देता है. So the communication starts with ideation. Ideation means you get an idea. Somebody who starts conversation, he should get an idea first. So ideation, encoding, message, channel, decoding, and feedback. Yes. मैम इनकोडिंग और डिकोडिंग का एक एग्जांपल दे सकती हैं क्या प्लीज? हाँ. यस मैम प्लीज. जैसे क्या कहते, तुम्हारे मन में एक अभी आइडिया आया, एक क्वेश्चन पूछना है, तो तुम क्या हो गए? तुमने एनकोड किया उस भाषा में जो आपको समझ में आ जाए. तो तुमने हिंदी यूज किया कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं क्या? तो मैंने क्या रिसीव किया? मैंने सुना, उसको डिकोड किया और मैंने जवाब दिया हाँ. ठीक है. चैनल यूज किया हैंड राइज करके. हाँ, you started a conversation. पहले आइडिया आया होगा ना? यस मैम. पहले एक आइडिया होगा, एग्जांपल पूछते हैं. तो you encoded, it means you are the encoder, you are the transmitter, and you have chosen face-to-face communication. It means you have not written, you have not given any chat, you have not messaged me on WhatsApp, you have not mailed me, but you have chosen face-to-face because the situation क्या है? अभी क्लास हो रहा है, अभी पूछ लेते हैं. So the situation was you wanted immediate feedback. Otherwise, you would have written a mail to me. Ma'am, can you please give me an example? या तो WhatsApp करते हैं, ma'am this and ma'am that. लेकिन तुमने क्या चूज किया? आपने चैनल क्या यूज किया? फेस टू फेस. हाँ. और मैंने क्या किया? एनकोडिंग,
Decoding Decoding happens. immediately it happens in seconds. मैंने सुन करके समझ करके मैंने फीडबैक दे दिया. This is the communication process. We started with you and ended with you because the message from me, the feedback is going to you, going back to you. अब इस बीच में अगर बैरियर आ जाता है, बैरियर तो कुछ हुआ नहीं, तुमने कुछ कहा, किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, everything went smooth. Encoding, message, channel, decoding and feedback. So this was very smooth. कहीं कुछ बैरियर नहीं आया. यहीं पर क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर्स आ जाते हैं. कभी कोई कनेक्शन खत्म हो गया, टेक्निकल बैरियर्स आ जाता है. Yes, ma'am. कभी कोई जोर से बोल दिया, कभी तुम्हारा ही आवाज सही से नहीं जा रहा है. Barriers can be from your side, barriers can be from my side. Yes, Now, supposing you do not know Hindi, you do not know English. You only know some other language like French or German. Then, language if you speak to me in French, I will not be able to understand. So you know that you will choose to speak in such a language so that the person you're talking to understands this. तो तुम उसी में एनकोड करोगे जिस भाषा में हमको समझ में आ रही, right? Yes, ma'am. Supposing if I'm talking to somebody who doesn't know English, who doesn't know Hindi, who only knows French, then what will happen? I will speak to him in the language he will understand. Or if I meet an American, he will not understand the way the English the way we speak, or the way I will have to speak to him in that kind of, in his accent, so that he can understand me, right? So this is encoding, speaking in such a way so that the other person, the person you are talking to understands it fully. Hi, yes, sir. BCA 1, roll number 26. 36 हो तुम क्या? हाँ बताओ. Yes, ma'am. Concise and compact का meaning मैंने नहीं समझा. Concise and compact. Concise आप already समझ चुके हैं. The 7th With of communication में concise का मतलब क्या, पहले बताओ. What is concise? Concise छोटा जरूर. Do not use too much of words. Yes. Unnecessary words को मत डालो. Verbose नहीं करो. बिल्कुल से concise करो. जितनी जरूरत है उतने ही लिखो. To the point. Compact का मतलब, हाँ, to the point. Compact का मतलब होता है, छोटा मतलब नहीं कि बहुत कुछ छोड़ के लिखो तुम. मैम ने कहा छोटा लिखने के लिए, तो you might think of बड़ा हो जाएगा, 4-5 पॉइंट छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा. वो नहीं हुआ. Compact में सारी की सारी चीजें included होनी चाहिए. But come words में. The whole story in very short. It should have a beginning, it should have a middle, it should have an end. Telling your story in a concise way and compact. It means compact मतलब क्या होता है? It should be in a frame जिसमें सब कुछ included हो. Right. Yes, BCA batch would almost 77. हेलो मैम, कैन यू हियर मी? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर सकता हूँ? मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैम चैट, आपकी आवाज नहीं आ रही, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर. Maybe your connection is a problem. मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही. Okay. तो तुम फिर से करो. फिर से करो. You can leave and come again. बाकी लोग को आवाज आ रही मेरी? Yes, ma'am. Then maybe some connection problem with you. क्या आ नाम? रही है मैम आवाज. Yeah, hello. Hello, can you hear me? Yes, ma'am. No, I'm talking. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. We can hear you. B277, can you hear me? Yes, we all are hear you. Hello. Yes, ma'am. No, I'm Yes, talking. ma'am. 27. BCA batch 2, BCA AKU 77. वो म्यूट है मैम.
नहीं, I've unmuted everybody. उसने अनम्यूट नहीं किया मैम। मैम उसका आवाज ही ठीक है, चलो, he's saying, can you repeat all the process? Ma'am, compact means just like a summary. Compact means छोटे में, बहुत कुछ included है, it is compact. Everything included. Yes, ma'am. मैंने तो पहले ही क्लियर किया, कंसाइज का मतलब नहीं है कि छोटा लिखना है, बहुत कुछ छोड़ के लिखना है. Concise means in short, but compact. It means it should have a, telling your story in a very short, concise and compact way. Yes. Yeah. You can surely ask questions as and when required. So this you will be remembering. This comes in your external exam also. What is the process of communication? That is why I gave you in detail. So, Excuse me, ma'am. purpose. What is the purpose of technical proposal? Like any other proposal, it has a typical unique purpose. What is the purpose? It means business. When you're writing a proposal, you want business and you want your business to be accepted. That is why you want your proposal to be accepted. A technical proposal could be a document wherever there's an introduction of the product. सबसे पहले तो आप जो भी sell करना चाह रहे हैं, describe the product, right? Explaining, however, it will facilitate solve the recipient's issue. और वैसा solve करे, और इस तरह से होना चाहिए ताकि जो कमी है, जो need है किसी organization का, वो आपके पास वो answer है. You have the answer to the need of the organization. So, for example, when I say that I would like to take up music classes, or I would like to take up meditation classes, or I would like to take up soft skill classes for CIMAGE, or I have in mind to take up spoken English classes for CIMAGE. I have all this in mind. और हम जानते हैं कि there is a need for such classes at CIMAGE. So when there is a need, the proposal can be accepted. Need है तभी तो accept होगा ना. नहीं तो क्यों accept होगा? Why the waste of time? But I know there's a need and there's a purpose. How will these classes benefit the students? In many ways. How will the classes benefit the organization? In n number of ways. This is another workshop that we conduct. IT के साथ-साथ, management के साथ-साथ, we are also working on communication skills, like practical knowledge, functional in English, how to speak English, what are the things required to speak English? Yes, Shivam. Yes, ma'am. यहाँ पे document का मतलब क्या होगा? A technical proposal could be a document whenever. Could be a document. मतलब आप एक document ही है ना proposal. आप something which is written ना एक document है. Yes. कुछ भी आप लिखेंगे that turns into a document. A technical proposal could be a document wherever there is an introduction of the product, जिसमें product का introduction, a document which should contain सबसे पहले the introduction of the product. मैंने पहले ही बताया था proposals can be oral, proposals can be written. You can give an oral proposal and follow it up by a hard copy or a soft copy. ठीक है, पहले बात करोगे, उसके बाद तुम follow it up करोगे. First of all, you will research कि whether requirement is there or not. ठीक है, you will research, you will call, and then you will follow it up. It can be oral also. So this type of proposal ought to be concise and should provide details of the complex product in easy words. Concise and in easy words. You do not anything technical, even technical writing it is not very elaborative. Literature, when you're talking about literature, you can write pages and pages and pages. But when you're talking about
technical communication and business communication, concise is the word. Even in letter writing, आप लोगों ने देखा कि बहुत लंबा letters लिखा जाता नहीं है. One paragraph should contain not more than 2-3 sentences. And any business letter should not exceed more than three paragraphs. It should be concise, compact and precise. So, another definition, proposals are a vital kind of job-related writing. It is job-related. You want to sell your expertise, you want to sell your ideas, you want to sell your knowledge, your skill. So these are transferable skills. जो भी skills आप transfer कर सकते हैं, कुछ आपके पास है, दूसरों को आप देना चाहते हैं, for your benefit and for the company's benefit. So proposals are a vital kind of job-related writing. It is vital, it is important, because the acceptance will result in vital operational enhancement. इसलिए कि अगर accept हो जाएगा, then you will be gaining a lot. You will be gaining in many ways: mental employment, physical employment, monetary gains, isn't it? New business, further jobs, and safer operation condition and safer operating conditions. So बहुत तरह का फायदा होता है अगर आपका proposal accept हो जाता है. And as it is said, proposals are a vital kind of job related writing, because the acceptance will result in vital operational enhancement. You will be able to learn, and with every kind of job, हर job जो तुम take up करते हो, that enhances your skill, that empowers you even more. You get the experience. You are more knowledgeable. You are more experienced. It means operational enhancements. By doing, you will learn a lot. तुम जिस तरह से काम करोगे, that will help you in your knowledge, in your skill, in the development of your all-round skills, and you will be a better knowledgeable person, maybe a better version of your usual self. वो हर काम जो करते हो, आपने देखा नहीं कि every presentation that which you make in your class, each presentation will take you further to success, will give you that confidence. So this is called operational enhancement. जब भी तुम podium पे आके बात कर speech देते हो, या तुमने जो भी last month में तुम लोगों ने दिया, all those presentations, you all made PowerPoint presentations, you all delivered, you all asked questions, you all answered questions. It was interactive sessions. So with every question that you ask, you are taking yourself, you are enhancing yourself, you are building that confidence, a stepping stone. You are stepping a little closer to success. Proposals are written offered to unravel a technical drawback. To solve, unravel means to solve a technical drawback, something which is the drawback, something which is not functioning. You have the answer to it, and because of your proposal, you will be able to fulfill the need to solve the problem, or to undertake a project sensible or theoretical or nature. और theoretical nature का होगा, जैसे soft skill classes कोई लेना चाहेगा, something which you need. It can be theory, it can be technical, it can be just about anything. So they are written offers. And every proposal is a request, is an offer. Why? To solve the problem that the company may be having. Proposals in general aim to resolve your problem. In general, proposals are only there to solve the company's problem, to resolve the company's problem. Number one, modify a procedure. It means कोई procedure ऐसा है, कुछ काम ऐसा हो रहा है जो उतना click नहीं कर रहा है, तो you will modify a procedure. उसको rectify करोगे. ये procedure slow है, this procedure is not working, you will rectify, you will modify. And then you will provide answers to queries. You have the answers, and you will provide answers to the queries, provide recommendation,
and coaching or conduct analysis on a subject of interest to each party. It means there are various kinds of proposal which you can choose of. You can also apply for OJT. OJTs are on-the-job trainers. Students who are studying, students who would like to work part-time in the lab or the library or whatever. They are called on-the-job trainers, OJTs. There are a lot of, you can give proposals for that. In my free time, I would like to come and help out. A lot of work being done in the office. You may offer your proposal for OJT. You may give a proposal for starting on with something on sports. If you are a good cricket player, you can give a proposal for helping others by becoming a coach. Yes, I can do this. But you have to have that skill. वो skill and confidence आपको होना होगा. ठीक है, तभी आप कुछ आगे कुछ कर सकते हैं. And regarding OJTs, आप क्या लिखोगे, क्या summary करोगे? Because how you will write, how will it help you? इस तरह से this is going to help you. What? Network issues. Screen? Yes, ma'am. Network issues बहुत हो रहा है ना? What does the proposal serve?
The proposal serves what? क्या मकसद है? What is the objective of a proposal? Hello? Hello, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is the purpose? What is the objective or purpose? The objective is to serve. Proposals serve to review and improve. To review and improve existing products and service to fulfill the ever-increasing sophisticated needs of today's extremely competitive business atmosphere. It means continuous improvement is required for any product. अगर तुम टीचर भी अगर तुम कुछ स्किल भी अपना देना चाहोगे किसी को तो जो स्किल तुम लेकर के आए हो you will not continue with that skill but you will continue to improve whatever your product is. Today in today's competitive world everybody needs to improve. Excuse me, ma'am. यहाँ पे sophisticated का मतलब क्या होगा? क्या चीज? Sophisticated need मतलब आजकल के इंसानों के needs बदलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. So people are becoming more sophisticated, more refined. What is the meaning of sophistication? He's a very sophisticated person. मतलब complex. Not complex. He is well behaved. He is good mannered. He has good speaking skills. Like Rahul Bajaj was very sophisticated. तो हर तरह के इंसानों के नीड में बढ़ते चले जा रहे हैं, इम्प्रूव होते चले जा रहे हैं. पहले तुमको ये चाहिए था, you wanted a mobile phone, then you wanted a mobile phone, after that you wanted a pulsar bike, उसके बाद you want an iPhone, you want a laptop, then you will go for a four-wheeler. You become sophisticated. You start enhancing. तो आजकल के इंसानों के needs भी sophisticated हो जाते हैं. पहले थोड़ा में काम चल जाता था, लेकिन अभी आपको needs क्या हो गया है? Sophisticated needs हो गया है. And the term sophistication means a person who is sophisticated, well behaved, well mannered, well spoken, a good person. उसका opposite क्या हुआ? Uncouth, मतलब ill mannered, jungly. Yeah, Rahul Bajaj passed away. The late Rahul Bajaj, I should have said. He comes from a very sophisticated family. Mrs. Indira Gandhi comes. She also was very sophisticated. A lot of people who come from sophisticated families. यहाँ मतलब होता है फैमिली के बारे में बात नहीं है. यहाँ मतलब होता है कि sophistication बढ़ रहा है, needs बढ़ रहा है. Ever increasing and sophisticated needs of today's extremely competitive business world. तो business world में भी बहुत competitions हो रहा है. This is अपने product को बेहतर कर रहे हैं, अपने skill को sharpen कर रहे हैं, enhance कर रहे हैं. If you want to survive in this world, you will have to enhance your skills. You will have to do something good. You will have to go on adding something to your skill. They aim at providing new and sound concepts to accelerate the advancement of society. और हमेशा new नई चीज को, नए concept को लेकर के आते हैं, so that it can accelerate, it can increase, they can survive in this advanced society.
आपके भी नीड्स पहले थे क्या है, अभी क्या है, मतलब बहुत बदल गए होंगे। अभी यू नीड द इंटरनेट एट ऑल टाइम्स, एवरीबॉडी नीड द मोबाइल, ठीक है नहीं? नीड्स बदला कि नहीं आपका? यस शिवम? यस मैम, यहाँ पे ऑलमोस्ट फेयर का मतलब क्या होगा? कहाँ पढ़ रहे हो? बिजनेस ऑलमोस्ट फेयर। सेंटेंस रीड करो इस पैराग्राफ। यस यस। रीड, कौन सा वर्ड बताओ? कॉम्पिटिटिव बिजनेस इज ऑलमोस्ट फेयर। जस्ट 2 लाइन। थर्ड लाइन में कंपेरेटिव बिजनेस एटमॉस्फेयर, ये पढ़ रहे हो? यस। जो बिजनेस वर्ल्ड हम लोग का है, बिजनेस एटमॉस्फेयर जो है, इतना कंपटीशन हो रहा है, एक प्रोडक्ट को लेके कितनी तरह की चीजें हो रही है। एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर ओन ब्रांड। टेक्नोलॉजी में भी कितना कंपटीशन हो रहा है। You will have to think about कि कौन सा सबसे अच्छा होगा, because they are all good. टफ कंपटीशन है। तो इस टफ वर्ल्ड में, इस कंपेरेटिव वर्ल्ड में बिजनेस एटमॉस्फेयर को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए, हमेशा स्किल को एनहांस करते रहना चाहिए। ओनली देन यू कैन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। Now we come to the characteristics of business proposal. Write down the question, what are the characteristics of a business proposal, of a technical proposal? I will give you the layout and then we'll discuss this in the next class. To demonstrate to acceptable decision makers that their wants would be met with. तो इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करना जिसकी आपका प्रपोजल जो आपने लिखा है वो नीड के अनुसार आपने बनाया है, एंड सो दैट योर डेमोन्स्ट्रेशन विल हेल्प द क्लाइंट टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल. Writing to be accepted. Be additional artistic than different kinds of skill. When you're writing a business proposal, it should be artistic. It should be creative. Include creative writing. Write something good. Permit informality and private approach style to some extent. Personal touch लाने के लिए थोड़ा informally भी लिखिए. Permit, allow कीजिए, थोड़ा सा informal writing भी कीजिए. And private approach, it means अपनी बात को सामने रखने के लिए चाहे किसी भी तरह का स्किल यूज करना हो आप यूज करिए, so that your proposal is accepted. All your effort all your efforts should be to accept it. Use all kinds of effort, whatever it is. इनफॉर्मल राइटिंग का मतलब कैसे होगा, मतलब क्या चीज? इनफॉर्मल राइटिंग मतलब थोड़ा पर्सनल टच लगा दीजिए इसमें, और क्या. इनफॉर्मल राइटिंग, यू नो व्हाट इज फॉर्मल राइटिंग एंड इनफॉर्मल? थोड़ी सी इनफॉर्मेलिटी चलती है, like when you're writing a proposal, you can say that let us discuss, we all know that this has been happening, but I have something which can be of great use to you. थोड़ा सा पर्सनल टच रिक्वायर्ड है, so that you know, जैसे कि मैंने बताया था बिजनेस लेटर्स में PS क्या है? PS क्या है? PS is informally you're writing something to develop goodwill. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ permit informality. A line of business proposal has there's no room for informal communication. लेकिन यहाँ का permit some kind, a little bit of informality and private approach.
Private approach stylish to some extent. In style, whatever you're doing, अगर आप स्टाइल से कर रहे हैं, then no problem about it. लेकिन पूरी informal मत रहिए. Keep in view the customer's convenience, monetary gains and status. इस बात का ध्यान रखिएगा कि कस्टमर का स्टेटस क्या है. Keep in mind, keep in view the customer's convenience. उनका convenience भी आपको देखना है. Monetary gains भी देखना है. Do not demand such high rate, which can be painful. And keep in view उनका status. Look neat and enticing. It means your proposal should look neat and clean. यानी कि बहुत पहले लिखा हुआ है, कहीं मुड़ा टूड़ा हुआ है, कहीं pages turned है, nothing. It should be fresh. It should be neatly done and attractive. Enticing means attractive. कभी-कभी आप लोग असाइनमेंट देते हैं, कभी-कभी बहुत लोगों का असाइनमेंट बहुत अच्छा रहता है, देख के ही एंटाइसिंग होता है. वो फ्रंट पेज बिल्कुल वो डिजाइन वगैरह बना करके, लड़कियां ज्यादा करती है सब. So they create a मेहंदी डिजाइन and देख के लगता है कि हाँ इसको सबसे पहले पढ़ लो इसको. Enticing, attractive. Include outline, background, objective, description of the matter, methodology and value estimates. Include outline. Outline it. अब पढ़ेंगे एग्जेक्टिव समरी में तब जानेंगे कि व्हाट इज आउटलाइनिंग इट. बैकग्राउंड दीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव दीजिए, क्यों आप लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दीजिए ऑफ द मैटर, हाउ विल यू इम्प्लीमेंट इट, मेथोडोलॉजी किस तरह से आप काम करेंगे, एंड वैल्यू, व्हाट इज द बजट, एस्टिमेट योर बजट. Anticipate any doable reason for rejection and supply suggestions for overcoming them. Anticipate मतलब रिजेक्शन के लिए भी एंटिसिपेट कीजिए कि हो सकता है कि मेरा एक्सेप्ट नहीं हो और सामने ये प्रॉब्लम है, तो उसका भी आंसर मेरे पास होना चाहिए. तो किस तरह से हम कन्विंस कर पाएंगे. यस शिवम. हेलो हेलो. यस, क्या हुआ. लुक मैम, लुक नीट एंड इंटीसिंग का मतलब क्या होगा. अभी बताया ना, लुक नीट. आपका प्रपोजल बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए. आप असाइनमेंट सबमिट करते हो तो कैसा देते हो, थोड़ा मुड़ा गंदा सजा नहीं ना. नीट एंड क्लीन होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए ना. क्या भी लिखा अभी आप प्रपोजल दे रहे हैं, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा. एंटाइसिंग मतलब होता है अट्रैक्टिव. Enticing, attractive. Sonali. Yes, Sonali. Sonali, yes. Yes, ma'am. Ma'am, I'm audible. Yeah. Yes, ma'am. Ma'am, monetary gain means, ma'am. Money. Monetary, all about money. Yes, ma'am. Related to money. Monetary is money. तो म्यूचुअल बेनिफिट होता है ना, कंपनी को भी बेनिफिट हो रहा है, आपको भी बेनिफिट हो रहा है. Proposals are all about monetary gains also. Yes, ma'am. Let me conclude these points and we'll have to take the mark in the next class. To anticipate any doable reason. कोई रीजन ऐसा हो जो हो सकता है कि आपका प्रपोजल रिजेक्ट भी हो जाए, इस बात को ध्यान में रखिएगा. एक्सेप्ट हो जाए तो सोचता ही लोग, लेकिन कभी ये भी सोचना चाहिए कि अगर रिजेक्ट हुआ तो क्या क्या चीजें हम ऑफर और कर सकते हैं. And suggestion for overcoming them. There can be reason for rejection. Anticipate that. मान के चलना है. And supply suggestion for overcoming them. Overcoming मतलब कि उस रिजेक्शन को एक्सेप्टेंस में बदलने का. Follow meticulously and the necessities of the solicitor.
or whatever is required. अगर solicitor है, somebody who is there to advise, to solicitor का मतलब ही होता है people who advise, follow the advice and do what they are trying to suggest. Contain specific of all parts of structure in keeping with the aim, usefulness and needs of the recipient's language. और उस सब मद्दे नजर रखिएगा recipients का language, उनका aim, receiver का client का usefulness, how this proposal will be useful, how it will be, how it is the need of the company, and keep also in mind the recipient's language. Use plain, direct and unambiguous expressions. Whatever expressions you are using, whatever language you are using, it should be plain, direct and unambiguous. What is the meaning of unambiguous? Something which is not doubtful. Something which should be clear, with no double meaning. Ma'am, Yes. recipient language का meaning क्या हुआ? पढ़ने वाले का लैंग्वेज मद्देनजर, मैंने कहा ना कि एनकोडिंग क्या होता है. एनकोडिंग में होता है कि आप रिसिपिएंट्स का स्टेटस भी देख रहे हैं. You have to give a lot of respect. You have to pay attention to the recipient's language. उनको क्या आता है वो भी देखना पड़ेगा. हाँ, उनको क्या आता है नहीं, कुछ इस तरह से लिखेंगे कि objectionable language नहीं होना चाहिए. Which should match your language should match the recipient status. We'll continue with this in the next class. And what, Ma'am, Ma'am, there is a doubt. Solicitor means क्या होता है in that sentence? somebody who gives advice. बिजनेस वर्ल्ड में होता है ना, आप 4 लोग से बात करके तब आप सोलिसिटर होता है हर किसी का, जो हर प्रपोजल को वो पूछते हैं, देखते हैं, एडवाइस लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, जैसे कि एक लॉयर होता है. Okay, ma'am. ma'am, बिजनेस फर्म्स में होता है, सोलिसिटर्स होते हैं जो कि देख सुन समझ करके फिर एडवाइस करते हैं. हाँ, यस अभिषेक. ma'am, what is the main difference between non-technical and technical proposal, ma'am? If it is not written in technical, then how can we write? टेक्निकल मैंने बताया था, प्रपोजल the definition is the same kind. The characteristics different है. It should be concise. It should be more like how will you do it? कैसे आप इसको implement करेंगे? इसको क्या process करेंगे? Technology should be more involved. And it should, Ma'am, in non-technical, there is no format in non-technical proposal. there is a format. Format वही रहेगा. Except कि इसमें technical होगा और इसमें उतना लंबा नहीं लिखना है. Concise लिखना है. Any technical proposal should be in short. Because बस point to point करना है. Yes, ma'am. You have to only deal it technically. वो अभी आपको हम एक example आपको हम दिखवाएंगे, जो कि किस तरह से एक फॉर्म है जिसका कंप्यूटर खराब हो गया है फ्रंट डेस्क का, और किस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, उसने कैसे टेक्निकली बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है. एंड दैट इज अ वेरी गुड प्रपोजल. आई विल शो यू. लेट मी कंप्लीट दिस. फिर आप तो करेंगे ही. Yes, ma'am. बिना किए तो होगा नहीं. यू लर्न बाय डूइंग. मैंने तो आपको बहुत कहा कि आप एक प्रपोजल दीजिए कि हमको ओजेटी बनना है. ओजेटी का जब आपको चाहिए, आप बताइए क्या फायदे हैं, क्या नीड है, हम लोग को क्या नीड है, आपको क्या नीड है, म्यूचुअल बेनिफिट क्या होगा. ठीक है. Yes. ठीक है. होपफुली इन मार्च आपका ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रहा है, तो 2 तारीख से. Yes, ma'am. चलिए, ठीक है फिर. Okay, Thank you, ma'am. 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 Buddy, please give me Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. thank you.